गाइस, आज हमारे यहाँ पर सेमिनार हो रहा है और हमने आधे घंटे में बैठा रखे, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। Then there are risk of more attacks every day. So today we'll be discussing that what is cyber security, how you can prevent yourself, and at last we'll be discussing about social engineering. My friend just asked you a question, what is social engineering? So what is social engineering? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Have you ever got a call, unknown call, asking you for your bank details? It's very common, right? कभी ऐसा भी होता है कि you have installed a tool और उसकी वजह से operating system corrupt हो गया. So that's why we do what we use Kali Linux, or we can say Linux. Okay? So in this practical, what we'll be doing is we'll be cloning a website first using a tool, Social Engineering Toolkit. So to launch that tool, I will be going to the terminal, and in the terminal I'll be writing the command. Is it? So to launch that tool, guys, I will be writing a command that is SE toolkit. This tool will be giving me the liberty to perform various attacks. One of the attacks is an infectious payload, and I can take the access of your machine and so on. I have to perform cloning, so I will be doing what? I'll be going with the second option, that is website attack. In website attack also we are having further attacks. I can perform webjacking, I can perform tabbing, I can perform various attacks, alright? Now I want to perform cloning, so I will be selecting the fifth option, that is webjacking. Now in this we are having three options: web templates, site cloner, and we are having custom import. Now I have to do what? I have to perform website cloning. So I will be doing what? I'll click on second and I'll get the option. Now the first thing it will be asking me for the IP address. What is IP, guys? आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ ली है? ना IP V4 और V6 में क्या डिफरेंस है? और वो 64 बीट और V6 64 बीट 64 128 128 64 कब आया? So it will be asking me for the IP address, guys. If I'll be using a server, if I'll be using my own domain for performing the attack, I'll be writing the IP address of that server or my domain. Alright. Right now I'm using my Kali Linux, so I will be writing the IP address of my Kali Linux over there, so that whatever credentials will be generated, it will be coming to me. Okay. So I'll be putting the IP address. Now it's asking me for the URL, guys, जो मुझे क्लोन करना है. Alright. All of you are used to use GitHub. सबको पता है GitHub? You all know GitHub? Okay. Let me open that, guys. We have GitHub. Is this the login? Is this page authentic or not? ये original है या नहीं? How many of you check before working on a website? How many of you check whether it's authentic or not? How many of you check it, guys? Sir, HTTPS check करते हैं. बहुत बढ़िया. First we check, guys. The first thing is HTTPS at the top. Beside that you get a padlock. Certificate मतलब if you are a legitimate person. आप आम्रपाली से बीटेक कर रहे हो. 4 साल बाद आम्रपाली आपको एक डिग्री देगा. उस डिग्री को लेके आप दुनिया के किसी कोने में भी जाओ, and when you will be saying कि I have done my graduation from Amrapali, the guy will be checking it, and if you are a legitimate person, they will say okay, right? Amrapali ने आपको एक डिग्री दी जिसको आप यूज कर रहे हो as a authentic. तो आज हम कॉलेज आके बहुत बुरे फंसे. एक 4 बजे छुट्टी होगी, दूसरी 2 घंटे की सेमिनार हो रही है, वर्कशॉप. वहाँ भी मज़ा नहीं है. साइबर सिक्योरिटी पे बस बता के हम ख़त्म कर देंगे.
वही कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारे सिक्योरिटी पेमेंट करते हो तो सेफली करा करो। जो भी लिंक आते हैं वो सब भी सेफ रहा करो। देखते हैं, अभी तक तो 4 बजे है, छुट्टी कितने बजे होती है पता नहीं। 4 बजने वाले हैं। सुबह से कभी ग्राउंड में कभी कैंटीन में बैठ रहा हूँ। चलो बस में चलते, टाइम हो गया। टाइम हो गया, कब जाएगी बस? 4 बजे पक्की? ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हो गया उन लोगों का? खत्म होने वाला होगा। चल बैठेंगे। चलो हाँ यार बस में चल रहे हैं। हो BA जाएगा वालों का एग्ज़ाम हो रहा है, बीटेक वाले फंसे हुए हैं। शिवा में बोतल लेके आना।